لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. I would like to start with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the blessing of Almighty Allah be upon all of us. I am Mateen Manzoor, the student of class 7th of Peace School Nagam. I am very thankful to the school management and all the teachers of my school as they have started giving online classes on the WhatsApp in this crucial time when all the educational institutions throughout the world are closed due to this deadly COVID-19 virus. I am also highly thankful to the teachers who are giving online classes on WhatsApp, especially Kaisar sir, who is teaching us with zeal and dedication. Now I will come to my topic, that is structure of matter. So the first thing that come in this topic is, what is matter? Matter is anything that occupies space, has mass and can be felt by one of our five senses is called matter. So matter is the thing which occupies space and has mass, that is weight, and can be felt by one of our five senses. यानी कोई भी हमारे five senses से वो feel हो जाए तो वो matter है. Example, here is the duster. I will keep it on table. It occupies some space, and if I will carry it in my hand, I feel that it has some weight. So it has mass also, and I can feel it by our senses, as I can see it and I can feel it by our skin. So everything surrounding us is matter. Air is also matter, as it occupies space and has also mass, and we feel it by our nose. So the question arises, then what is not matter? If we take shadow, that is not matter, as the shadow does not occupy space and that does not have mass, but we can see that, we can feel that by our senses. So shadow and light and various things are not matter. Moving ahead is element. Element is the purest substance, means it is made up of only one kind of substance. For example, oxygen. Oxygen is made up of only oxygen. It is not made up of something else. And we cannot break oxygen, means we cannot, ऑक्सीजन में से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते. जो ऑक्सीजन है इसमें से हम ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं निकाल सकते. So it is pure substance, it is an element. So element is the purest substance. Moving ahead, here is the term atom. Atom is the smallest particle of element. Atom is the smallest particle of element. Take a paper and start cutting it. एक टाइम आ जाएगा जब ये पेपर जो है ये फर्दर कट नहीं होगा, क्योंकि ये उतना स्मॉल हुआ होगा कि ये अब फर्दर कट नहीं होगा. तो वो स्टेज ऑफ पेपर, द स्टेज ऑफ पेपर जहां पर ये फर्दर कट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एटम. असल में definition of atom is the invisible and indestructible part of an element is called atom. Invisible means वो चीज जो देखे नहीं जा सकती, हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप होना चाहिए. सो द इनविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ एलिमेंट. इनविजिबल हम हो गया वो जिसे हम देख नहीं सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल हो गया जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वो पार्ट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम. नाउ हियर इज वन मोर thing, that's compound. See, compound is the combination of two or more than two substances which are chemically combined with each other in fixed ratio. Compound is the combination of two substances in chemical means. By chemical means आपने chemical change पढ़ा ही होगा. In chemical change वहां पर change आती है internal structure में. इसका मतलब compound जो ये असल में एक mixture है, type of mixture है जो दो elements से बना है और more than two elements से बना है, जो chemically combined है. Chemically combined means उनके internal structure में तब्दीली आ रही है, आती है, और which are in fixed ratio. Fixed ratio मतलब अगर हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम लेंगे,
ये जब कंबाइन होते हैं ये फॉर्म करते हैं वाटर। अगर हम लेंगे हाइड्रोजन की 3 एटम्स और कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ, क्या ये वाटर बनाएगा? नो, इट विल नॉट मेक वाटर, because the water only contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। इसमें हम ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। सो ये फिक्स्ड रेशियो में है। सो compound is the combination of two substances in which two or more than two elements in which they are combined with each other in biochemical means in fixed ratio। Now another thing is here molecule। हमने पीछे पढ़ा कि atom is the smallest particle of element। यहां पर भी मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड है। हम H2O लेंगे, इफ वी विल ब्रेक H2O वाटर, हम वाटर को ब्रेक करेंगे, एक टाइम आएगा ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा, जैसे एटम, तो वो वाटर मॉलिक्यूल है, वो फर्दर ब्रेक नहीं होगा, लेकिन हम उसको एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन अलग निकालेंगे और ऑक्सीजन, तो ये अलग अलग एटम्स हुए। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। नाउ लास्ट टॉपिक हियर इज केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन 2 or more than 2 substances react with each other to form new substance। मैंने पहले ही कहा केमिकल चेंज या रिएक्शन में नया सब्सटेंस जरूरी बनता है क्योंकि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। I will give you an example. Iron plus sulfur gives us iron sulfate. So when iron and sulfur combine chemically with each other, they give us iron sulfate। So the substance which mix with each other are called reactants। So here iron and sulfur are reactants। And the result, what is the result of these reactants, is called product। So reactants react with each other to give out products। This was all about today। I hope you liked the video, enjoyed and understood it very well। Thank you। Have a nice day ahead। Assalamu alaikum।